Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudire Nashtaprayesha Vadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttam Shloke Bhaktir Bhavati Nashtike. So continuing with the discussion on Sri Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, chapter 22nd, the process of devotional service, text 77 onwards. So Mahaprabhu is further speaking with Sanatana Goswami. Sei sab gun hai Vaishnava lakshan, sab kaha na jaye karitik darshan. All these transcendental qualities are the characteristics of pure Vaishnavas, and they cannot be fully explained. But I shall try to point out some of the important qualities. So Mahaprabhu had explained the qualities of Kanishta Adhikari, Madhyam and Uttam Adhikari. And then he said one who has unflinching devotion, devotional faith in Krishna. So all the good qualities of Krishna and demigods are consistently manifest in him. So some of the important qualities he is explaining. So these important qualities, they are already the qualities of the soul, and they're just covered over, that's all. So Kripalu Akrita Droha Satya Sarasam Nindosha Vadanyam Ridu Vishuchi Akinchan Sarvapakaraka Shanta Krishnaika Sharana Akama Aniha Sthira Vijita Shadagun Mit Bhuk Apramata Manda Manad Amani Gambhira Karuna Maitra Kavi Daksha Mauni. Devotees are always merciful, humble, truthful, equal to all, faultless, magnanimous, mild, and clean. They are without material possessions and they perform welfare work for everyone. They are peaceful, surrendered to Krishna, and desireless. They are indifferent to material acquisitions and are fixed in devotional service. They completely control the 6 bad qualities: lust, anger, greed, and so forth. They eat only as much as required, and they are not inebriated. They are respectful, grave, compassionate, and without false prestige. They are friendly, poetic, expert, and silent. So these are some of the qualities. Titikshva karunika suhridaseya sarvadehina majate shatrava shanta sadhva sadhu bhushana. Devotees are always tolerant, forbearing, and very merciful. They are the well-wishers of every living entity. Suhrida sarvadehina. They follow the scriptural injunctions, and because they have no enemies, they are very peaceful. These are the decorations of devotees. This is a quotation from Srimad Bhagavatam. When the sages headed by Shaunak inquired about Kapil Dev, the incarnation of Godhead, Sud Goswami, who was the topmost devotee of the Lord, quoted talks about self-realization between Vidura and Maitreya, a friend of Vyasadeva. During these talks, the topic of Lord Kapil had come up, and at that time, Maitreya had repeated Kapil Dev's discussions with his mother, wherein the Lord states that attachment to material things is the cause of conditioned life. When a person becomes attached to transcendental things, he is on the path of liberation. So devotees, they are not attached to material things. Mahat sevam dvaram ahur vimuktes tamo dvaram yoshitam sangisam mahantaste samchitta prashanta vimanyava surida sadhoye. It's a verdict of all Shastras and great personalities that service to a pure devotee is the path of liberation. By contrast, association with materialistic people who are attached to material enjoyment and women is a path of darkness.
Those who are actually devotees are broad-minded, equal to everyone, and very peaceful. They never become angry and they're friendly to all living entities. Vimanyava. Vimanyava means they're not envious, never envious. Without anger, okay, sorry, anger. They never become angry. I mean, unnecessarily, of course. Arjun also became angry. Hanumanji became angry at Ravan. He burned the whole Lanka down. But they didn't become angry for themselves. That's what their service. Krishna Bhakti Janma Mula Hai Sadhu Sangha. Krishna Prema Janmete Ho Puna Mukhya. The root cause of devotional service to Lord Krishna is association with advanced devotees. Even when one's dormant love for Krishna awakens, association with devotees is still most essential. Mukhya Anga. Further, bhavapa vargo brahmato yada bhaveja janasya tarhi achyuta sata samagamo. Sata sangamo yarhi tadeva sadgato paravareshe tvai jayate ratihi. O my Lord, O infallible Supreme Person, when a person wandering throughout the universes becomes eligible for liberation from material existence, he gets an opportunity to associate with devotees. When he associates with devotees, his attraction for you is awakened. You are the Supreme Personality of Godhead, the highest goal of the topmost devotees, and the Lord of the universe. So, association of devotees, the most important aspect, and in that association, we make progress in bhakti, and all these wonderful qualities they manifest. At atyantikam kshemam prichama bhavato anagha sansare yasmin kshanardho api satasanga sevadhir nirnam. Kshanardho, Kshanardho, half a moment. O devotees, O you who are free from all sins, let me inquire from you about that which is supremely auspicious for all living entities. Association with the pure devotee for even half a moment in this material world is the greatest treasure for human society. So this is again from Bhagavatam, 11th canto. Satam prasangam manma virya samviddo bhavante hritkarana rasayana katha. Tad joshana dashva apavarga vartamani shadha ratira bhaktir anukrameshyati. The spiritually powerful message of Godhead can be properly discussed only in a society of devotees. And it is greatly pleasing to hear in that association. If one hears from devotees, the way of transcendental experience quickly opens, and gradually one attains firm faith that in due course develops into attraction and devotion. So, in the association of devotees, the supreme, spiritually powerful message of Godhead can be properly discussed and heard. And when one hears from devotees, so the way of transcendental experience quickly opens, and then slowly and gradually he progresses from Shraddha to Rati to Bhakti. Asatya Sanga Tyagei Vaishnavaschara. Stri Sangi Eka Sadhu Krishna Abhakta Ara. For a Vaishnav, the standard behavior is to avoid the association of ordinary people, not interested in Krishna Bhakti. Such common people are first those who are too materially attached, especially to women, and second, people who are not at all devotees of Lord Krishna. Vaishnavas should avoid the company of these two kinds of people. Because again, people we associate with, we develop those qualities. We begin to like those things that the others like. So, and mind, see, mind, the games it plays, it generally or normally the tendency of the mind is to go to the baser,
things. Just like gravity pulls everything down, similarly, those qualities of passion and ignorance, they really attract the mind. Instead of being attracted by goodness things, qualities, or the topics. For one to remain in goodness and being attracted by things of goodness, one has to work very hard. It's not that easy. Then one will normally, naturally be attracted to things of goodness. No. Mind wants to go down. Satyam Shocham Daya Maunam Buddhir Hari Shrir Yasha Kshama. So lots of more qualities are given. By association with worldly people, one becomes devoid of truthfulness, cleanliness, mercy, gravity, spiritual intelligence, shyness, austerity, fame, forgiveness, control of the mind, control of the senses, fortune, and all opportunities. One should not at any time associate with a coarse fool who's bereft of the knowledge of self-realization, and who's no more than a toy animal in the hands of a woman. The illusion and bondage that accrue to a man from attachment to any other object are not as complete as that resulting from association with a woman or with men too much attached to women. So illusion and bondage that accrue to a man from attachment to any other object are not as complete as this attachment. These verses quoted from Srimad Bhagavatam are spoken by Kapil Dev, an incarnation of the Supreme Personality of Godhead, to his mother. Herein Kapil Dev discusses pious and impious activities and the symptoms of those who are devoid of devotion service to Krishna. Generally, people do not know about the miserable conditions within the womb of a mother in any species of life. Due to bad association, one gradually falls into lower species. Association with women is generally greatly stressed in this regard. When one becomes attached to women or to those who are attached to women, one falls down into the lower species. So, so one falls down into the lower species. That happens. Why? Because, and not just women, it's the opposite sex actually. And why? Because we start developing attraction for the body. We get more and more entangled in bodily concept of life. The living entity in material nature thus follows the ways of life, enjoying the three modes of nature. This is due to his association with that material nature. Thus he meets with good and evil among various species. According to Vedic civilization, one's association with women should be very much restricted. In spiritual life, there are four ashrams: brahmacharya, grihastha, vanprastha, and sannyas. The brahmachari, vanprastha, and sannyasi are completely forbidden to associate with women. Only grihasthas are allowed to associate with women under certain very much restricted conditions. That is, one associates with women to propagate nice children. So associate means that union. Other reasons for association are condemned. The idea is one need to, or everybody, women, men, everybody, they need to make progress spiritually. That's what the human life is for. Not to get involved and get entangled in other activities. Varam hut vah jwala panjarantara vyavasthiti na shauri chinta vimukha jan samvasa vaishasham. It is better to accept the miseries of being encaged within bars and surrounded by burning flames than to associate with those bereft of Krishna consciousness. Such association is a very great hardship. So, being encaged within bars and surrounded by burning flames.
mean, it's very painful and highly unlikely one will get out of it alive. But it is still better than to associate with those who are not devotees. So hard. I mean, it's and with very tough instructions are there. Ma drakshi kshina punyan kvachidapi bhagavad bhakti hina na manusyan. One should not even see those who are bereft of devotional service and Krishna consciousness, and who are therefore devoid of pious activities. One should not even see those. But for preachers, preachers have to meet people, every kind of people, and try to transform their hearts. Ete sab chadiyar varna sharam dharma, akinchanaya laya Krishneka shara. Without hesitation, one should take exclusive shelter of Lord Krishna with full confidence, giving up bad association and even neglecting the regulative principles of the four varnas and ashrams. That is to say, one should abandon all material attachment. Means following Varnashram dharma is great because this is how Krishna has designed the society. But even giving up to take shelter of Lord Krishna's, that is most important. And Krishna himself said, Sarva dharman parityajya mam ekam sharanam raja. After giving up all kinds of religious and occupational duties, if you come to me, the Supreme Personality of Godhead, and take shelter, I shall give you protection from all of life's sinful reactions. Do not fear. Bhakta Vatsal Kritagya Samartha Vadanya Hena Krishna Chadi Pandit Nahi Bhajayanya. Lord Krishna is very kind to his devotees. He is always very grateful and magnanimous, and he possesses all abilities. A learned man does not give up Krishna to worship anyone else. An intelligent person gives up the company of those who are attached to women and bereft of Krishna consciousness. One should be free from all kinds of material attachment and should take full shelter under the lotus feet of Krishna. Krishna is very kind to his devotees. He is always grateful and he never forgets the service of a devotee. He is also completely opulent and all-powerful. Why then should one take shelter of a demigod and leave Lord Krishna's shelter? If one worships a demigod and leaves Krishna, he must be considered the lowest fool. So, and as Shloka Mahaprabhu is saying, Krishna is very grateful and very magnanimous. And always, he doesn't even forget even one little service a jiva does for his pleasure. And he's always there to reward the living entity. It's just, we have to have that faith. Kaha panditastad param sharanam samiyad bhakta priyad rit gira surida kritagyat sarvan dadati surido bhajato abhi kaman atmanam api upachayo natayasya. My dear Lord, you're very affectionate to your devotees. You're also a truthful and grateful friend. Where is that learned man who would give you up and surrender to someone else? You fulfill all the desires of a devotee, so much so that sometimes you even give yourself to them. Still, you neither increase nor decrease by such activity. So you even give yourself to them. Just like Krishna became the charioteer of his own devotee, Arjuna. And so many other examples are there. Vigya janera hai yadi Krishna guna gyan anya tyaji bhaje tate uddhava prama.
Whenever an experienced person develops real knowledge of Krishna and his transcendental qualities, he naturally gives up all other engagements and renders service to the Lord. Uddhav gives evidence concerning this. So, a person, when he hears or develops knowledge of Krishna and his transcendental qualities, he just cannot render service to anybody else. And what are his qualities? Aho bakiyam stan kalakutam jigam seyapayayad apiya sadvi leve gatim dhatri uchitam tatovanyam kamva dealum sharanam rajim. Oh, how powerful, how wonderful it is. Putna, the sister of Bakasur. So Baki means sister of Bakasur, wanted to kill Krishna by smearing dead poison on her breast and having Krishna take it. Nonetheless, Lord Krishna accepted her as his mother, and thus she attained the destination befitting Krishna's mother. So this is Leve Gatim Dhatri Uchitam Tatavanya. Of whom should I take shelter but Krishna, who is most merciful? See, this is Krishna's quality. Sharnagatera akinchanera ekai lakshan tara madhye praveshaye atma samarpan. There are two kinds of devotees, those who are fully satiated and free from all material desires, and those who are fully surrendered to the lotus feet of the Lord. Their qualities are one and the same, but those who are fully surrendered to Krishna's lotus feet are qualified with another transcendental quality, which is Atma Samarpan, full surrender without reservation. So this is the quality of a devotee. And then Krishna is always there to take care of them, to protect them. Anukulyasya sankalpa pratikulasya varjanam rakshishyati vishvaso goptritve varnam tatha atma niksheva karpanye shadvidha sharanagati. The six divisions of surrender are the acceptance of those things favorable to devotional service, rejection of unfavorable things, the conviction that Krishna will give protection, the acceptance of the Lord as one's guardian or master, and full self-surrender and humility. So 6 symptoms of Sharanagati. And Bhaktivinoda Thakur has explained that very nicely in a book. One who is fully surrendered is qualified with the 6 following characteristics. The devotee has to accept everything that is favorable for the rendering of transcendental loving service to the Lord. So first thing is, we accept things which are favorable to rendering the service. And second is, he must reject everything unfavorable to the Lord's service. This is also called renunciation. So accepting favorable things and rejecting unfavorable things. And there could be many unfavorable things. A devotee must be firmly convinced that Krishna will give him protection. No one else can actually give one protection, and being firmly convinced of this is called faith. This kind of faith is different from the faith of an impersonalist who wants to merge into the Brahman effulgence in order to benefit by cessation of repeated birth and death. A devotee wants to remain always in the Lord's service. In this way, Krishna is merciful to his devotee and gives him all protection from the dangers found on the path of devotional service. The devotee has that faith, firm faith. Krishna will protect me. Definitely he will protect. And then fourth, the devotee should accept Krishna as a supreme maintainer and master. He should not think that he is being protected by a demigod. He should depend only on Krishna, considering him the only protector. The devotee must be firmly convinced that within the 3 worlds he has no protector or maintainer other than Krishna.
Then fifth is self-surrender, means remembering that one's activities and desires are not independent. The devotee is completely dependent on Krishna and he acts and thinks as Krishna desires. And the sixth quality is devotee is meek and humble. So Krishna states in Bhagavad Gita, Sarvasya Chaham Hrithi Sannivishtu. I am seated in everyone's heart, and from me come remembrance, knowledge, and forgetfulness. By all the Vedas, I am to be known. Indeed, I am the compiler of Vedanta and I am the knower of the Vedas. Situated in everyone's heart, Krishna deals differently according to a living entity's position. The living entity's position is to be under the protection of the illusory energy under Krishna's or under Krishna's personal protection. So we have an option. We can choose. When a living entity is fully surrendered, he is under the direct protection of Krishna. And Krishna gives him all intelligence by which he can advance in spiritual realization. The non-devotee, however, being under the protection of the illusory energy, Maya, increasingly forgets his relationship with Krishna. Sometimes it is as how Krishna causes one to forget. Krishna, like in the shloka it says, Mata smritir jnanam apohanam cha. So from me comes remembrance, knowledge, and forgetfulness. But this is living entity's desire. Krishna fulfills that. He doesn't want anybody to forget him. But if the living entity so desires, he fulfills his desire. Sometimes it is as how Krishna causes one to forget. Krishna personally causes his devotee to forget material activities, and through the agency of Maya, Krishna causes the non-devotee to forget his devotional service to the Lord. This is called apohana, means he makes them forget. Tava smiti vadam vacha tatheva manasa vidam tat sthanam ashritastanva modate sharanangata. One whose body is fully surrendered takes shelter at the holy place where Krishna had his pastime. And he prays to the Lord, my Lord, I am yours. Understanding this with his mind, he enjoys spiritual bliss. This is from Hari Bhakti Vilas. Sharanalaya kare Krishna Atma Samarpan. Krishna tare kare tat kale Atma Samarpan. When a devotee thus fully surrenders unto Krishna's lotus feet, Krishna accepts him as one of his confidential associates. So these are all process of devotional service and qualities of bhakti. Mahaprabhu is explaining. I guess I can stop here. See anybody has any questions or comments? Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. Prabhuji, before the class started, na, you were talking about that Mayavad वाला ये चलता रहेगा. वो वैष्णविज्म और मायावाद का अलग अलग philosophies and all. तो आई मीन इफ वी जो स्क्रिप्चर्स जो भी हैं जो वेद व्यास जी ने 18 पुराण बनाए हैं उसमें आई मीन ही इज सो इंटेलेक्चुअल पर्सन बट उसमें जैसे शिव पुराण लिखा और फिर पद्म पुराण लिखा तो हमने हमने घर पे उसको पद्म पुराण को पूरा पढ़ा. ठीक है. एंड देन शिव पुराण शुरू किया. तो शिव पुराण में वी आर एट द फर्स्ट चैप्टर राइट नाउ. ठीक है. तो वहाँ पे एक ऐसा आता है कि एक क्या कहते हैं एक स्ट्रक्चर एक पिलर ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है और वहाँ पे विष्णु जी और ये आते हैं क्या कहते हैं ब्रह्मा जी आते हैं और देन
वो जो पिलर लाइक स्ट्रक्चर, वो लिंक का जो स्ट्रक्चर है, तो ही इज टेलिंग दैट कि मेरे से ही महेश्वर और रुद्र फॉर्म हुए। एंड ही डिनोट्स, दैट पिलर डिनोट्स कि वो जो लिंग है वो डिनोट कर रहे हैं कि पुत्र, लाइक सन, टू विष्णु जी एंड दादवन ब्रह्मा जी को। तो मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू पॉइंट आउट एट दिस कि अगर कोई शिव पुराण पढ़ रहा है, तो यहाँ ये भी वेद व्यास जी ने लिखा, एंड देन पद्म पुराण भी वेद व्यास जी ने लिखा। मैंने लिखा नहीं, लिखा तो गणेश जी ने लिखा, उन्होंने बोला इसको लिखने और वो लिखते गए। तो देन देर इज अ, अब कुछ, नाउ इट कम्स राइट, समवेयर वी ग्लोरीफाई दैट महाविष्णु जी ये है वो है, एंड देन वी से कि शिव जी उनसे आए हैं, प्रकट हुए, ये वो। तो ऐसा क्यों लिखा? आई मीन इस तरह से, दो तरह से, इफ वन पर्सन इज रीडिंग टू बुक्स, ठीक है, तो उसको कंफ्यूजन हो रहा है कि यहाँ पे पुत्र करके बता रहे हैं, और वहां पे कह रहे हैं कि मैं तो आपका दास हूँ। पद्म पुराण अगर हम पढ़े हैं, तो उसमें साफ क्लियरली शिव जी ही पूरा स्टोरी बता रहे हैं पद्म पुराण में। पार्वती जी को बता रहे हैं कि देखो, ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि देखो आ, कितने बड़े हैं प्रभु जी, कृष्ण जी के बारे में बता रहे हैं, और सारी स्टोरीज बताते चले गए। एंड देन अगेन ही कम्स बैक, शिव पुराण में दिखा रहे हैं कि मैं महेश्वर हूँ, मैं ही रुद्र का फॉर्म हूँ मेरे अंदर से। तो इट सीम्स लाइक सदा शिव इज टॉकिंग अबाउट दिस। एंड देन ही सेज कि अगर मूर्ति, हम मेरी मूर्ति की अगर पूजा करते हो, तो उससे ज्यादा बेटर है कि बेटर यू प्रे फॉर माय शिवलिंग, और उसकी स्थापना कैसे करनी है, एंड सो मेनी थिंग्स आर देयर। वो कथा आती जाती है शिव पुराण में। तो प्रभु जी, एक छोटा सा यही प्रश्न है कि इफ वी आर रीडिंग, रिलीजियसली वी आर फॉलोइंग एंड रियली रीडिंग दिस बुक्स, तो ऐसा क्यों भ्रम है प्रभु जी कि यहाँ पे एक बुक्स में कुछ और अदर बुक्स में कुछ? सी, अब अगर स्कूल में जाओ, हम्म। तो फर्स्ट ग्रेड की बुक्स और सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ, 10th ग्रेड सबकी अलग अलग होंगी ना। हम्म। तो वेद व्यास जी, जो कि भगवान के ही लिटरेरी इनकारनेशन जिनको बोला गया है, जी। तो क्योंकि वो जानते हैं हर किसी का लेवल अलग अलग है। तो पुराण भी 18 पुराण है, जिसमें 6 तमोगुण, 6 रजोगुण, 6 सत्वगुण के लोगों के। तो जो सत्वगुण के लोग हैं, उनको तमोगुण और रजोगुण वाले पुराण पसंद ही नहीं आएंगे। हम्म। वो रजोगुण सत्वगुण वाले ही पढ़ेंगे, उनको फॉलो करेंगे। तो जो दूसरे पुराण हैं, तो लोगों को ठीक है, उनको वो पसंद है, पढ़ो, फॉलो करो, हल्के हल्के, ग्रेजुअली यू विल मेक प्रोग्रेस। आइडिया ये है कि उनको हल्के हल्के ले जाने का। ठीक है, वो लड़ाई रहेगी कि हु इज सुप्रीम, हाँ। विच इज फाइन, विच इज फाइन। और एक्चुअली हमारी जो डिस्कशन हो रही थी, वो सो अहम श्लोक श्लोक या जो भी इसको कहो, कहने के लिए हम्म। हो रही थी कि व्हाट इज सोहम। और कई लोग बोलते हैं, और माता भी बता रही है, कई लोग तो सोहम की चैंटिंग करते हैं हम्म। माला पे। तो सोहम का मतलब क्या है? सोहम मतलब, सो मतलब वो, अहम मतलब मैं वही हूं, हम्म। मतलब मैं ही भगवान हूं। उनको भी नहीं पता होगा सोहम का मतलब क्या है, जो चैंटिंग करते हैं। बट ठीक है, करो कुछ तो, यू विल मेक सम प्रोग्रेस। अच्छा प्रभु जी, ये मायावाद जब हम कहते हैं, आर वी सेइंग दैट शिव के जो भक्त हैं वो मायावादी हैं, ऐसा है? सारे नहीं है। शिव जी, शिव जी की पोजीशन इतनी यूनिक है। हम्म। अब शिव जी एज ए, उनका एक वैष्णव संप्रदाय भी है, रुद्र संप्रदाय। अब वो हम्म। एज ए शंकराचार्य भी है मायावाद को फैलाने के लिए। एज ए वो देवता भी हैं, क्योंकि आशुतोष हैं, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, जिसको जो चाहिए देवी देवताओं के हिसाब से वो दे भी देते हैं। पर एज ए वैष्णव भी है, एज ए परम वैष्णव। तो बिल्कुल। इनकी पोजीशन बहुत यूनिक है। और क्यों कर रहे हैं वो तो,
पद्म पुराण में जैसे आपने ही बताया, वो खुद भगवान की सेवा करना चाहते हैं। भगवान अब उन्हीं को सबसे ज्यादा मुश्किल सेवा देते हैं। बहुत ग्लोरीफाई किया प्रभु जी। मतलब ना पार्वती जी को साफ बता रहे हैं कि देयर इज नो वन, और इतने अच्छे से स्टोरी बता रहे हैं, एक एक चीज को बता रहे हैं कि देखो यही है सब कुछ, सर्वोपरि सब कुछ, और हर एक स्टोरी को अच्छे से बता रहे हैं। मैं तो मम्मी को बता रहा था, मैंने बोला देखो शिव जी खुद बता रहे हैं, पार्वती जी को पूरी स्टोरी बता रहे हैं, कृष्ण जी की, विष्णु जी की, जितने अवतारों की कथा बता रहे हैं पद्म पुराण में। या एंड पर शिव जी इज ए ग्लोरियस पर्सनैलिटी, वेरी वेरी। भगवान खुद उनको ग्लोरीफाई करते हैं और वो भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं। अब अब जैसे शिव पुराण में एक चीज आती है कि शिवलिंग की स्थापना कहाँ की जाए, तो बहुत क्लियरली स्टेटेड है कि कोई एज हो, कोई जहाँ पे कोई सागर हो या कुछ ऐसा सरोवर हो, उसके आस पास में उनकी स्थापना करो जहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता हो, पिलग्रिम्स का। तो सेम एग्जैक्ट थिंग हैज हैपेंड इन रामेश्वरम, जहाँ पे श्री रामचंद्र जी ने हम्म। रामेश्वरम लिंग की स्थापना की वहां पे। एंड सो तो मैं क्या करता हूँ प्रभु जी ने, रिलेट करता रहता हूँ कि चीजें कहाँ कहाँ पे, और पढ़ता ही रहता हूँ मतलब। तो देन आई थॉट बट कि नो। बट द हम्म। प्रॉब्लम विद पीपल इज, वो शिव हम्म, जी को या तो हाँ भाई मटेरियल चीजें मांगने जाएंगे उनसे। वो ये हाँ नहीं देखते शिव जी दुर्गा जी के हस्बैंड हैं, पार्वती जी के। जी। तो पर वो खुद तो क्रिमेटोरियम में रहते हैं, अपने लिए खुद तो घर भी नहीं बनाया, और हम उनसे घर मांगने जाते हैं। हम्म। तो उनका एग्जाम्पल नहीं फॉलो करना चाहते, हम उनसे मांगना चाहते एक बार एक कथा आती है प्रभु जी, जहाँ पार्वती जी उनसे कहती है ना कि आपने सबके लिए, सबके पास तो बहुत अच्छे अच्छे कैसल है, महल है, हमारे पास क्या है कुछ, मतलब उनको थोड़ा सा अंदर में कंफ्यूजन होता है पार्वती माता जी को। तो देन शिव जी का ऐसा आता है कि वो एक अपने हेयर को, बालों में से एक हेयर को निकाल, बोलते हैं अच्छा तुम अगर चाहती हो तो लेट्स डू इट। तो और एक बहुत प्यारा सा कैसल बन जाता है वहां पे। इनफैक्ट आई थिंक ये जो लंका जिसको कहते हैं, रावण जिसको ले लिया था कुबेर से, ये भी उन्हीं के लिए बनाया हुआ था शायद, ऐसा कुछ ये कुछ तो नहीं, बट यस उन्होंने बनाया था एक महल। हाँ। बट आप आगे बताओ। तो तो ऐसा तो आता है, भोले भंडारी तो हैं ही, उनके पास लोग जाते हैं, महाशक्ति के पास, वैष्णो देवी वगैरह जाते हैं, इसीलिए कि पावर एंड वेल्थ बोथ शुड कम, कहते हैं कि बट उनकी। इसकी इसी हाँ की ये स्टोरी जो है ना, शिव जी ने जो हाँ महल बनाया था, हाँ हाँ। उसके आगे भी है। अच्छा। आगे क्या है कि अब वो महल तो बना दिया, अब रहने के चलो पार्वती जी हम चलते हैं रहने के लिए। पर तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए कि भाई आप हम्म ऐसे नहीं जा सकते, इसका वो गृह प्रवेश करना होता है। ठीक है, गृह प्रवेश करते हैं, किससे करवाना है भाई, कौन अच्छा इसके लिए पंडित है? कहते हैं सबके लिए इतना बढ़िया पंडित है, उसको सब वेदों का ज्ञान है, रावण, उसको बुलाओ वो करवाएगा पूजा यज्ञ। ठीक है, हम्म रावण तो मेरा डिवोटी है, उसको बुलाते हैं। बुलाया, रावण ने बहुत अच्छा यज्ञ किया। हम्म और फिर जाने लगे, पर रावण बोले अरे अभी खत्म कहाँ हुआ, अभी पहले मेरी दक्षिणा तो दो। कहते हैं हम्म आपको कुछ पता ही नहीं है, दक्षिणा तो दो, उसके बिना कैसे यज्ञ खत्म होगा? तो शिव जी कहते अच्छा मांगो क्या दक्षिणा में क्या चाहिए? कहते मेरे को ये राजमहल ही दे दो। ये मैं ले दे तो शिव जी पक्का फिर ब्राह्मण था। वापस क्योंकि वो उनके लिए कुछ नहीं है ना, चाहते ही नहीं है सब। एग्जैक्टली। और ऊपर से शिव जी के जो भक्त हैं वो अमीर होते हैं, उनके पास पैसा होता है क्योंकि शिव जी देते हैं। और हम्म। कृष्ण खुद तो महलों में रहते हैं, पर उनके भक्त सारे गरीब होते हाँ एग्जैक्टली प्रभु। हैं। तो इसलिए कृष्ण की भक्ति करना नहीं चाहता कोई। अच्छा, कुछ कहते हैं ना प्रभु जी, सुदामा की तरह जब निर्धन कर देते हैं तो देन कुछ मिरेकल होता है कृष्ण के भक्तों के लिए, कि वहां से एक अलग एपिसोड शुरू होता है कि जब एकदम से फुली सरेंडर्ड हो गए कि अब बस ठीक है, अब नहीं चाहिए कुछ भी, कृष्ण को ही चाहिए, तो देन ही गिव्स बैक स्लोली ग्रेजुअली, और देना उनको फिर शुरू। चाहिए नहीं ना, क्योंकि उनको कृष्ण की सेवा चाहिए बस।
Absolutely. और फिर मतलब ये सीधा उनका लास्ट जन्म है और सीधा भगवान के धाम जाएंगे। तो शिव जी के भक्तों को वो नहीं मिलता ना। अच्छा प्रभु जी, एक प्रश्न और है मेरा। जैसे कहते हैं ना कि जो शिव भक्त हैं, वो शिव लोग जाते हैं, देन अपने कृष्ण जी के वो दोज हु गोज टू वैकुंठ लोग, तो वैकुंठ से वापस कोई नहीं आता। देन इज इट सेम फॉर शिव आल्सो, शिवलोक आल्सो दे डू नॉट रिटर्न बैक एक्सेप्ट ब्रह्मलोक एंड देवलोक, ऐसा है पर क्या? वो आ सकते हैं ना, अच्छा। क्योंकि इट इज नॉट द टॉप मोस्ट। हम्म। बट प्रॉब्लम इस वहां है। मोक्ष जुड़ता है ना प्रभु जी, जैसे शिव जी की किसी स्टोरी में कि मैं मोक्ष प्रदान करता हूँ शिवलोक में, यू कैन गो बैक शिवलोक, और वहां से फिर ऐसे कई जगह आता है ये चीज लाइनें कि डिवोटी विल नॉट रिटर्न बैक, एक बार शिवलोक गए तो फिर वापस नहीं। बट हाँ, ब्रह्मलोक और देवलोक से तो आते हैं जब उनके हाँ, पुण्य तो खत्म क्षीण होने लगते हैं। ब्रह्म ज्योति से भी आ जाते हैं। अच्छा। बट नॉट फ्रॉम वैकुंठ। बहुत वास्ट है प्रभु जी, आई मीन आई केप्ट ऑन आस्किंग क्वेश्चंस एंड इतने सारे स्क्रिप्चर्स है ना, पढ़ते पढ़ते कई जगह प्रभु जी स्टोरी भी घूम के आ जाती हैं। चंचुला की स्टोरी, वो बिंदु उसका हस्बैंड था ना वो चंचुला, वो भी वो आ जाता है स्टार्टिंग में शिव पुराण में। एंड देन समवेयर पता नहीं, शायद रिलेटेड स्टोरी पद्म पुराण में भी था कहीं ऐसा, वही था कि कुछ हट के था वो ना, वो व्यभिचारिणी थी एंड देन वो जाती है प्रेत योनि में, बनता है हस्बैंड उसका तो उसको लिबरेट कराती है, तो ऐसा कुछ somehow I don't know। तो यह धुंधरी। बहुत सारी पुराणों धुंधरी। में तो माता बहुत। जी, बहुत सारी स्टोरी पढ़ते पढ़ते सब मिक्स हो जाते हैं कभी कभी। सब रिलेटेड है ना प्रभु जी एक दूसरे से actually। हाँ। हम्म। Yeah. चलो, you all ठीक have है, a safe and थैंक wonderful यू, day. थैंक यू प्रभु Stay जी, safe हरे and कृष्ण। थैंक यू stay प्रभु जी, हरे जय श्री कृष्णा। राम। जय श्रील प्रभुपाद।